Hi everybody and welcome back to my channel. Uh, in the previous video, I have started COVID topic of general medicine synopsis, and this is the fourth video. And जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि जर्नल मेडिसिन का synopsis कर रहे हैं हम इस वीडियो में और ये फोर्थ वीडियो है बाकी थ्री वीडियोस यू कैन गो एंड वॉच दैट इज जर्नल मेडिसिन synopsis पार्ट 1, 2, 3 and the people who are new on my channel, I want to say that if you are doing dentistry and you want to compete for a higher exam or any entrance exam you want to give, you can watch the videos because I cover the basics. All the 20 subjects will be covered in this video, and you can also recommend this to your friends and families. As well as don't forget to hit the notification bell so that every time I upload a video will be notified, and show some love. Do like it, comment on it if you have any query because it really helps and motivates to make more and more videos. So the previous video I've talked about all this, and in this video I'll be starting from this point. And the last video was short because it was made short, but in this video I'll be covering much and much possible. सो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है कोविड में? ह्यूमन टू ह्यूमन अब सबको पता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सबसे मेन चीज़ होती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर बंदा 6 फीट दूर है या 2 मीटर दूर है तब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। कॉन्टैक्टिंग विद कंटामिनेटेड आर्टिकल्स, ऑब्वियसली जितने भी आर्टिकल्स हैं कंटामिनेट अगर वो होते हैं तो उनको सैनिटाइज करना पड़ता है। एंड अप टू 9 आवर्स तक का रहते हैं उसके ऊपर पार्टिकल्स। हैंडलिंग इन्फेक्शनस सिक्रीशंस लाइक स्पूटम्स, ब्लड, सीरम, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। नाउ देयर इज होस्ट साइटोकाइन रिस्पॉन्स, दैट इज साइटोकाइन स्ट्रोम। कई बार क्या होता है, होस्ट में बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं, दिस कैन लीड टू अ स्ट्रोम एंड द लेवल्स ऑफ इंटरल्यूकिन 1b and interleukin C, interferon gammas and other ones. So all these are associated with COVID-19's severity, and the treatment has been proposed to combat cytokine storm, as it remains to be one of the leading causes of morbidities and mortalities. So cytokine storm को रोकना बहुत ज़रूरी होता है, एंड इसके अंदर आपको इंटरल्यूकिन 1b, इंटरल्यूकिन C, इंटरफेरॉन्स, कीमो अट्रैक्टेड प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। प्रोटीन नंबर 10 भी होता है, मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेड प्रोटीन भी होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएंट्स। यूनाइटेड किंगडम में B117 अल्फ़ा वेरिएंट था। साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे B135-1। साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ीलियन में इट वाज B112B। ये सब इतना नहीं आता पेपर में, बट इन केस। नाउ डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो इट्स B1617 variant contains mutations from two separate viruses variants. Okay, and here the glutamic acid is being replaced by lysine at the position at 484. So this you can remember. After that, let's talk about pathophysiology. Okay, so talking about pathophysiology, okay, it's really huge. So primary target is the nasal and lung epithelial cells. So nose and lungs are the targets, and the primary and the binding of the receptor expressed by host cells, followed by fusion with cell membrane, also affects gastrointestinal organs as ACE receptors are present. So it can cause acute myocardial injuries and chronic damage to the cardiovascular system. Acute myocardial injuries may also be related to ACE2 receptors. So binding to the inhaled SARS-CoV-2
the ciliated secretory cells in the nasal epithelium is by CE2. सो बाइंडिंग होती है, अगर इनहेल हुआ तो बाइंडिंग होगी इसकी रिसेप्टर्स की टू द सिक्रीटरी सेल्स इन द नेजल एपिथेलियम। जो नेजल एपिथेलियम में सिक्रीटरी सेल्स होते हैं वहाँ से बाइंड करेगा SARS-CoV-2 बाया ACE2। उसके बाद क्या होगा, बाइंडिंग के बाद रेप्लिकेशन होगा, वायरल रेप्लिकेशन होगा, लोकल प्रोपेगेशन होगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रोपेगेट करेगा, थोड़ा सा रेप्लिकेट करेगा, अबाउट 1/5 ऑफ ऑल द पेशेंट्स एंड कंटामिनेटेड टू द इन्फेक्शन विद वायरल क्लियरेंस इन अबाउट 80% ऑफ द पेशेंट्स फॉर 10 to 14 days। फिर क्या होगा, कंडक्टिंग एयरवेज में आ जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा, माइग्रेट करेगा। अगर ठीक नहीं करोगे, बंदे एंटीबायोटिक्स वगैरह लेकर, धीरे धीरे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से इन्वेजन करेगा इन्फेक्शन की ऑफ टाइप 2 पल्मोनरी एल्वियोलर रिसेप्टर एपिथेलियल सेल्स वाया ACE2। तो जो पल्मोनरी एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स हैं उन पे बाइंड कर जाएगा वाइल ACE2। सो सबसे पहले ACE2 से नेजल एपिथेलियल सेल्स, उसके बाद फर्दर डीप डाउन टू रेस्पिरेटरी ट्रैक दे हैव बाइंडेड टू द एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स। देन उसके बाद बाइंड करने के बाद इट विल रिलीज आइदर इंटरल्यूकिन 1, 6 और 8, 10, 12। मेन कल्प्रिट इज योर 6 एंड TNFs, इंटरल्यूकॉन्स, इंटरफेरॉन्स, ये सब चीज़ें, ये सब साइटोकाइन स्ट्रोम के अंदर आती है। इसके अंदर मेन चीज़ 6 होता है। उसके बाद या तो ये चीज़ करेगा या फिर क्या करेगा, वायरल रेप्लिकेशन करेगा, रिलीज़ करेगा वायरस पार्टिकल्स को, एपोप्टोसिस कर देगा होस्ट सेल्स की। उसके बाद कीमो अट्रैक्टेड फॉर न्यूट्रोफिल्स, ये जब स्ट्रॉम होगा तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आएंगे, CD4 सेल्स आएंगे, CD8 सेल्स आएंगे। अब ये सब क्या करेंगे, ये सब आके सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे ऑफ एपिथेलियल सेल्स की लंग्स में एंड विद CD8 मेडिएटर साइटोलॉजी एज वेल एज लंग इंजरी। सो होस्ट डिफेंस का काम चलेगा यहाँ पे, और अल्टीमेटली इट विल डिफ्यूज द एल्वियोलर डैमेज विद रिजल्टिंग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और वहाँ पे हमारी जो वायरल एप्लीकेशन हुई थी, इट कैन कंटिन्यू विद वायरल एप्लीकेशन एंड इन्फेक्शंस of the healthy alveolar cells and loss of type 1 and type 2 pneumocytes. So ultimately it will lead to alveolar damage and acute respiratory distress syndrome. So this is the basic cycle behind this that you need to know. After that we'll be diagnosing the very important thing, how to diagnose. This is actually important. So you can diagnose it by a number of investigations like pulse oximetries, ABGs, hemograms, metallic panel, coagulation screen, inflammatory markers very important, procalcitonin, C-reactive protein, troponins, lactate dehydrogenase। एंड कॉमन लेबोरेटरी एबनॉर्मैलिटीज़ में क्या क्या आता है, एक तो लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कम हो जाते हैं, देयर इज एलिवेटेड लिवर ट्रांसएमिनेज, काफ़ी ज़्यादा लिवर ट्रांसएमिनेज बढ़ जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाते हैं, और रीनल इम्पेयरमेंट के। सो दीज आर सम ऑफ द लैब एबनॉर्मैलिटीज़ दैट यू कैन सी। बेसिकली आपका लिम्फो कम हुआ, ल्यूको कम हुआ, प्लेटलेट्स का भी काउंट कम हो जाता है, लेकिन लिवर ट्रांसमिनेज बढ़ता है। उसके बाद ब्लड एंड स्पूटम कल्चर की अगर हम बात करें, so all the patients should be sent to rule out the causes for blood culture, sputum culture. They should be prior to starting antibiotics. Antibiotics से पहले ये कल्चर करवाना ज़रूरी है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीवर और साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके, fevers and signs of lower respiratory with like there is shortness of breath and signs of lower respiratory tract,
Talking about epidemiological risks, so any person, including healthcare workers who has had close contact with laboratory confirmed COVID-19 patient within 14 days of symptom onset. Talking about fever with severe acute lower respiratory illness, for example, pneumonias, ARDS, require hospitalization and without alternative expiratory diagnosis. While we if we talk about epidemiological risks, so a history of travel from affected geographical areas within 14 days of symptom onset, for example, Japan, Korea, South. So, and no source of exposure evidence. So, it can be epidemiological risk, it can be a clinically risk. So, these are the different features that you can consider. After that, for initial diagnosis, मतलब बेसिक बात क्या थी, हम डायग्नोसिस बना रहे हैं तो हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी है, लेबोरेटरी टेस्ट करना है, कल्चर्स करना है, साथ के साथ हमें किसको इन्वेस्टिगेट करना है वो ज़रूरी है। जिसको सीवियर फीवर या सिम्टम्स आ रहे हैं कफ के ये सारी चीज़ों के, उनको हमें फाइंड आउट करना है। प्लस जो लोग बाहर जाके आए हैं या जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो रोज़ एक्सपोज होते हैं, उन लोगों में टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। So for initial diagnostic test for SARS-CoV-2, CDC recommends collecting and testing of upper respiratory tract specimen. The following are the specimens. It can be nasopharyngeal, it can be oropharyngeal, it can be nasal mid-terminate swab. So these three swabs have been used, and an anterior nasal layer specimen using a flocked or spoon polyester swab. And nasopharyngeal wash aspirate or naso wash aspirate specimens can be used. Or talking about the accuracy. So according to accuracy, if it is a bronchoalveolar lavage swab, it is 93% positive rate. But that is not possible in every situation. So sputum is actually important and it's 72% positive rate. Nasal swabs are 63%. Fibrobronchial brush biopsies are 46%. Pharyngeal swabs 32%. Faces are 29%. So most important is this. After that, let's talk about swabs should be placed, like how you have to conduct the test. They should be placed immediately to sterile transport tube containing a 2 to 3 ml of viral transport medium, amines transport medium, or sterile saline, unless it test designed to analyze. Okay, so you have to transport it. After transporting it, you have to store the serum specimen for 2 to 8 degrees up to 72 hours. And if you delay in testing and shipping, so you have to you can recollect it. Now use only synthetic fiber swabs with plastic or wire shafts. Do not use calcium alginate swabs or swabs with wooden shafts, as they may contain substances that inactivate the viruses and inhibit PCR testing. So you have to use simple ones, and it is recommended to collect the sample only using nasopharyngeal swabs through oropharyngeal, although with oropharyngeal swabs. Okay. Talking about COVID-19 case definitions, if it's a suspected case of SARS-CoV-2 infection, a person who meets the clinical and epidemiological criteria. So you have a clinical criteria, which is actually a acute onset of fever or cough, or acute onset of any three of more of the following signs and symptoms like fever and weakness, fatigue, headache, malaria, sore throat, anorexia, dyspnea, diarrhea. So that is a clinical criteria how to find out. Epidemiological criteria like residing or working in area with a high risk of transmission of viruses. सिंपल सी बात है, ये बात पूछ रहे कि कैसे आप सस्पेक्ट करोगे। ओके, तो पहले तो हम क्लिनिकली देखेंगे कि उस पेशेंट में क्या चीज़ है, क्या साइन सिम्टम्स है।
क्लिनिकली देखने के बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि किस कॉलोनी में रहता है, क्या काम करता है, हो सकता है उसको ट्रांसफ़र हो गया सेक्शन। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, क्लिनिकल और एपिडेमियोलॉजिकल। फिर residing or traveling to an area with a community transmission anytime within 14 days prior to symptoms। अगर वो 14 दिनों पहले कहीं पे ऐसे गया था जहाँ पे एक्चुअली लोगों को था वहाँ पे, या वर्किंग इन एनी ऐसी हेल्थ केयर सेटिंग्स इंक्लूडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ जहाँ पे देयर इज चांसेस ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड, या फिर अ पेशेंट विद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी एक रेस्पिरेटरी इलनेस से सफ़र कर रहा है, सो it might have chances like acute respiratory infection with a history of fever or measured fever greater than 38 degrees Celsius and a cough with onset and within 10 days requires hospitalization. So, plus if there is asymptomatic patient showing no symptoms, not meeting epidemiological criteria but still positive, so it can be a possibility. Next is the probable case of SARS-CoV infection. A person who has met a clinical criteria or any histological criteria, epidemiological criteria, uh, and had a contact with a confirmed case, so he or she is a probable case of the infection, and suspected case with chest imaging showing findings suggestive of COVID-19. So you can have a chest X-ray also. You can find it from there also. A person with recent onset of anosmia, like smell loss, and agnosia, that is taste loss. So he or she can be like this. Plus a person, okay, अगर स्मेल लॉस टेस्ट ये सब चीज़ें हो रही है तो इट कैन बी अ सस्पेक्शन। Plus, death not otherwise explained in a person with respiratory distress as well as a contact. So yeah, definitely it was the case. Confirmed cases कैसे पता चलेंगे? Confirmed cases के लिए person with positive NAAT, that is nucleic acid amplification test, irrespective of clinical signs symptoms. So if you have a test which is a positive, that is lab test, it can be a confirmed case. Plus a person with positive SARS-CoV-2 antigen RDT and meeting either with probable definite causes एंड एंड ये सिम्टम्स सिंपल सी बात है कि कैसे आपको पता चलेगा कि कन्फर्म्ड केस है या फिर नॉन कन्फर्म्ड केस है, ये सब बात बताई गई है। डिफरेंट टाइप के टेस्ट यहाँ पे बात कर रखी है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, एंटीबॉडीज टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट अब कौन कौन से होते हैं? दैट कैन शो यू इफ यू एक्टिव COVID-19 इन्फेक्शन एंड नीड टू टेक स्टेप्स टू क्वारंटाइन और आइसोलेट। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको ये बता सकते हैं। प्लस मॉलिकुलर और एंटीजन टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, अदर टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कैन डिटेक्ट इफ यू हैव एक्टिव COVID-19 and samples for this are typically collected with nasal and throat swab and saliva. And antibody test looks for antibodies in your immune systems which are produced in response to COVID, SARS-CoV-2. So different tests. After that, a nucleic acid amplification test is a type of viral diagnostic test for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. So that detect genetic material, and that for SARS-CoV-2 specifically identify the RNA sequences. That can be used as use many different methods to amplify the nucleic acid and detect the viruses. So it includes, including but not limited to the reverse transcriptase polymerase chain reaction. Okay, but it is not limited to this reaction. गोल्ड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड्स RT-PCR, एवरेज सेंसिटिविटी इस टेस्ट की जो RT-PCR हम करते हैं वो 95% होती है, एंड एवरेज स्पेसिफिसिटी इज़ 98%. एवरेज टाइम टेकन इज़ 4 to 5 hours, and advantage of this platform lies in its accuracy of detection as well as ability to run up to 90 samples in a single run. So that's why you can use RT-PCR, which is very best. RT-PCR involves reverse transcriptions of SARS-CoV-2 RNA to complement DNA, followed by amplification of specific regions of cDNA. So एक तो ये आपकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है, प्लस amplification of specific regions. So this design produces process generally involves two main steps. First is sequence alignment and primer design, and second is assay optimization and testing.
The TrueNAT and CBNT systems have been deployed for diagnosis of COVID-19 in a view of availability of custom cartridges. So these platforms have widespread availability even at district and primary healthcare levels, as these platforms are widely used for diagnosis of TVs and infectious diseases. So these platforms have a quick turnover time of 30-60 minutes, but only 1/4 samples can be tested in one run, limiting the maximum numbers to be tested is 24 to 48 samples per day. Now there is a cyclic thresholds thing, which refers to the number of cycles an RT-PCR assay needed to amplify the viral DNA. Now this is defined as the number of cycles required for fluorescent signals to cross the threshold values. So it's inversely this levels are inversely proportional to amount of target nucleic acid, and the real time assays under the 40 cycles of amplification. So CT values can thus indicate the relative viral levels in a specimen, and lower CT value मतलब higher viral load है, और हाई CT वैल्यू मतलब लो वायरल लोड है. तो ये जो CT वैल्यू है ये हमें मिलती थी हमारी रिपोर्ट्स में. तो हम CT वैल्यू से फाइंड आउट करते थे कि अगर ये लो है तो उसका मतलब ज़्यादा वायरल लोड है, हाई है तो मतलब कम वायरल लोड है. तो CT वैल्यू वॉज एक्चुअली डायग्नोस्टिक थिंग. तो उसके बाद CT वैल्यूज़ थी, अगर लेस देन 29 है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, 30 to 37 मॉडरेट है, अप टू 40 है तो वीक है. फिर एंटीजन टेस्ट भी होता है. दिस न्यू कोविड-19 टेस्ट डिटेक्ट्स सर्टेन प्रोटीन्स. Okay, so the testing approaches relies on the detection of antibodies, but this test actually detects proteins. So it's thought that most people develop detectable levels of these antibodies, so called seroconversion 7 to 11 days after they have been exposed to the virus. So since there is a delay of few days, so these tests are not good for clinics, but instead serve as public health purposes. जो एंटीजन टेस्ट होता है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ लोगों पे यूज़ करता है, एंड these tests are faster and less expensive than molecular tests. Some experts consider antigen test more practical to use for large number of people. Myelin Discovery Solutions is the first truly Indian company kit to receive commercial approval for ICMR and is named as PathoCatch COVID-19 Antigen Rapid Testing Kit. Then there is COVID Kavach Anti SARS-CoV-2 Human Antigen ELISA Kit developed by ICMR and National Institute of Virology. It's intended for qualitative detections of IgG antibodies presenting clinical signs and symptoms. We do have other molecular tests like isothermic nucleation amplification tests. It's isothermal, okay? Also amplify the virus genomes, and they're faster than PCRs because they don't involve repeating heating and cooling units. So these cells typically detect the DNA using fluorescent tags. Then there is CRISPR gene editing technology, which was modified to perform the detection. So if the CRISPR enzyme attaches to the sequence, it's called a paper strip. So researchers expect the resulting test to be cheap and easy to use in a point of care settings, and the test amplifies RNA without RNA to DNA conversion. So a number of tests that have been conducted. Then there are some of the antibodies tests, like antibody testing, also known as serological testing, is done after the full recovery from COVID-19 and is an ELISA based test to detect SARS-CoV-2 antibodies in a serum or plasma component of blood. It uses purified SARS-CoV-2 S proteins as antigen. Okay, this is not a live virus. Since there is delay of few days, antigen based tests are not good. Instead, they serve as public health purpose. So when antibodies are found positive test results, it means that a person was immunized and infected with SARS-CoV. Okay, so all these information is good, like, but you don't need to go into depth. You should know the different names.
and the different important things. I'll just brush up it very quick. That is clinical features. So incubation period everybody knows it's up to 14 days, and most common symptoms is fever, cough, and fatigue. So loss of smell, anosmia, and dysgeusia are the features, and higher incidences of thrombosis and venous thromboembolism is also seen. Blood vessel dysfunctions and clot formations can be seen, and it is just because of higher D-dimer levels. Plus, pulmonary embolisms and ischemic events can also be seen. Another common case of death is complication related to kidneys. People who are having kidney disease are actually very much um, prone to this, and it is seen in 30% of hospitalized patients. Autopsies of people who died of COVID-19 have found diffuse alveolar damage, lymphocyte containing inflammatory infiltrates in the lungs. So, laboratory findings, for example, elevated IL-2, IL-7, IL-6, granulocyte macrophage, that is GMCF. So, in particular, pathognomic GM CSF secreting cells were shown to correlate with the recruitment of inflammatory IL-6 secreting monocytes. और rare symptoms क्या होते हैं? COVID tongue can be seen, like affected tongues typically have barred red areas surrounding an irregular white border. So this can be seen, that is a geographic tongue you can find out. And so these are actually very rare. Along with this, you can have COVID toe. That is one of the condition cases where reported initially with Spain and US. It's not actually that common. After that, Kwashiorkor and Guillain-Barré syndrome also can be found out, but they're actually very rare. Talking about hematological tests, which is important, we can go with D-dimer tests and antiphospholipid antibodies. So D-dimer levels like what? These are abnormal if there is abnormal coagulation function, including elevated D-dimer, has been reported to be a common cause in diseased patients and increasing odds of in hospital death. Antiphospholipid antibodies are specifically anticardiolipids, anti-beta 2 glycoproteins, IgG, IgA were found to be elevated. Now we have imagings. अगर हम एक्सरे निकालते हैं तो कहाँ कहाँ का यूज़ करना चाहिए? एक्सरेज, chest x-rays basically. So you can find out lateral lung infiltrations as in 25% of the patients, and bilateral lung infiltration in 75% of the patients. It may show bilateral multiple lobular or subsegmental areas of consolidations or multiple boltings or ground glass appearances. It is important. Computed tomographic findings can also be there, which can show ground glass appearance, crazy waving appearance, airspace consolidations, bronchovascular thickenings. Okay, so you can see the images. Severe consolidations can be seen. Okay, so these are the different images. You can also find them on the Google also. If you can, if you find an initial CT scan, so images showing extensive ground glass opacities in both of the lungs. But after that, control CT imaging at day 10, you will have a axial CT image which shows extensive honeycomb cysts associated with septal thickenings and subpleural predominances, where ground glass opacities has initially been observed. Later, you will find honeycomb cysts with thickenings. Now, after that, this is important. There was a chest CT score which was given always. The score according to the lobar involvement. If it is 1 score, it is less than 5%. But if it is 5, it is 75%. So you can correlate like this: 5%, 5, 25, 25, 40, 50, 70. Some of lobar scores indicating the severities. It can be mild, it can be moderate, it can be severe. If it is more than 18, it's very severe. If it is less than 7, it's actually mild. So this was a very huge topic, and we'll be discussing more of it in the next video also.
सारी चीज़ों क्या है कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी कवर इसलिए करी है बिकॉज ज़्यादा डिटेल्स नहीं कर सकते, बट यू शुड नो एटलीस्ट गुड टेस्ट, और कौन से में कौन सा एंटीबॉडी है, क्या एंटीजन है, क्या प्रोटीन में फाइंड आउट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए. सो आई सी यू द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. बाय बाय.